Hello everyone. So we are proceeding to the next natural disaster, that is the cyclones. So बेटा cyclones क्या होते हैं? They occur in the oceans only and always ये oceans में ही पाए जाते हैं. What are they? They are simply violently rotating mass of the air. जो air है वो high speed पे जब rotate करती है at a one point, that it causes the cyclones. And जो word cyclone है, it is derived from the Greek word cyclos, which means coils of the snake. So its coils of the snake also forms this shape. In this shape it is rotating, right? So in this northern hemisphere the cyclone है, they are said to be hurricanes. इनके अलग अलग names है, hurricanes, typhoons बोला जाता है. And इनमें जो wind है, it blows in the anti-clockwise direction, whereas in the southern hemisphere they are said to be cyclones. And they are जो की wind blowing की direction होती है, it is clockwise direction, like in this. Clear it is? So it is a strong and violent tropical storm along with the heavy rainfall and huge sea waves. इनके साथ साथ ओशन का जो वाटर है वो भी हायर लेवल्स पे उठ जाता है. इट कुड बी एट द हाइट्स ऑफ 10 to 15 किलोमीटर हायर इन द एटमॉस्फेयर. इसका जो हाइट वाइज ये हो सकता है साइक्लोन, राइट? सो व्हाट इज द एक्चुअली स्ट्रक्चर, क्या होता है? सबसे पहले वी विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज द काम रीजन. काम रीजन इज़ द बिल्कुल सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जहाँ पे जो विंड्स हैं वो ज़्यादा हाई स्पीड से नहीं चलती. एंड नेक्स्ट कम्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव रीजन. उसके बाद इट्स अ डिस्ट्रक्टिव, लेस डिस्ट्रक्टिव रीजन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता. वेयर एज इन द वेरी डिस्ट्रक्टिव रीजन, वहाँ पे द स्पीड ऑफ द विंड्स इज़ वेरी हाई एंड इट कुड बी लाइक 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है इन दैट रीजन. It may vary from 150 to 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इन वेरी डिस्ट्रक्टिव विंड रीजन. क्लियर इट इज? Whereas जो आई पार्ट होता है साइक्लोन का, आई पार्ट इज अ सेंटर पार्ट. इट इज अ calm region and it do not have any cloud in it. So this is have the region where the speed is of the wind is also normally वो क्या होती है? lesser होती है, guys. And its diameter could be 10 to 30 किलोमीटर जो काम रीजन का डायमीटर है, इट कुड बी देयर. वेयरएज टोटली अगर हम देखें तो इट कुड बी फॉर 1000 किलोमीटर्स तक का इसका जो डायमीटर है वो हो सकता है. क्लियर इट इज? नेक्स्ट कम्स दिस फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन. हाउ इज द साइक्लोन फॉर्म? बनता कैसे है साइक्लोन? दैट इज बेटा वी नो दैट व्हेन एवर देयर इज अ टेम्परेचर राइजिंग इन द ओशंस, तो इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर रीजन. लो प्रेशर रीजन से क्या होता है? दैट इज वो बनता क्यों है? दैट द हॉट एयर स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड सडनली. जब वो राइज करती है आफ्टर रीचिंग सम सर्टन हाइट इट स्टार्ट्स कंडेंसिंग. वहाँ पे जाके कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है. वेयर एज इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रेन. क्लियर? तो अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो, जिसकी वजह से जो ये ऐसे करते करते इट कीप्स ऑन राइजिंग इन द साइज ऑल्सो, अपर हाइट्स में राइज कर जाता है. क्लियर? वेयर एज जो बाहर वाला अगर हम रीजन देखें, दैट इज हाई प्रेशर रीजन. हाई प्रेशर रीजन है, अंदर लो प्रेशर रीजन बना हुआ है ड्यू टू द राइजन एयर, है ना. तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन दिस शेप. तो वो जो हायर प्रेशर वाली एयर है वो उसकी स्पेस लेना चाहती है, बट एज द ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द स्पाइरल शेप. तो फिर साइक्लोन ऐसे ऐसे रोटेट करता जाता है. एंड जो वाटर है, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, दे स्टार्ट फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेन डाउनवर्ड्स. क्लियर? इट्स साइज जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन. So it could vary from 10 kilometers in the air to 15 kilometers in the air. Clear? So as a cyclone always forms in the ocean, in the hot tropical regions, moist air over the ocean becomes warm and which rises up. After reaching certain heights, ये cool हो जाती है. cool होने के बाद it starts coming down. एंड जिसकी वजह से उसकी जो साइज़ है वो और भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं. नीचे से और एयर राइज करती है तो इसका साइज़ और बढ़ जाता है, राइट. एंड ड्यू टू विच देयर स्टार्ट्स अ शॉवर ऑफ रेन ऑल्सो कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द कोल्ड रीजन अपसाइड.
right? So the rising wind which is rising, it causes a low pressure region over here, जो low pressure की वजह से higher pressure से air उसकी तरफ blow करेगी, and it starts rotating in the circular direction because of the rotation of the earth, right? फिर वो ऐसे circular form में rotate करने लग जाती है. Instead of reaching directly to the center, high pressure वाली air, it starts moving in the circular shape. Clear it is? So this is how the cyclones are formed. मोस्टली जो साइक्लोन्स आते हैं दे अकर इन द इक्वेटरल रीजन्स, बिकॉज जहाँ पे जो इसका जो लो प्रेशर होता है वो ज़्यादा बनता है, बिकॉज द वार्म एयर राइजेस वेरी मच एट द इक्वेटर बिकॉज ऑफ द हाइयर टेम्परेचर. क्लियर? सो दे आर मोस्टली अकर इन द मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स दैट आर नियर द इक्वेटर. हैंस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस मोर cyclones than the western coast because of the temperature change. Clear? And also in Australian regions, Australia में बहुत सारे cyclones हैं जो देखने को मिल जाते हैं. Clear it is? Next comes the destruction caused by cyclone. क्या क्या नुकसान पहुंचाता है? That could be from the पेड़ उखड़ जाते हैं, also the high speed winds. They also uproot the poles, electrical poles also, they damage the houses, wooden houses. So even the water है, that comes in the form of waves, higher height की जो waves होती हैं, they start reaching the seashore and they start entering the low lying areas of the city. फिर वो flooding जैसा जो माहौल है वो बन जाता है due to this. So trees get uprooted, houses and the buildings collapse, telephones and other communication systems get disrupted. Cyclones are also accompanied by continuous heavy rains, due to which floods come, and जिससे diseases, air waterborne diseases का फैलने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है. Malaria, dengue kind of diseases are more prone in these areas then, right? So this is the destruction that is caused by the cyclone. Clear it is? Next comes the technology that is used in combating the cyclone. Earlier क्या होता था बेटा? That is कि जो cyclones थे, they were predicted about only one day या फिर less than one day ही पता चलता था that in few hours cyclone is coming. But nowadays with the advancement in technology, by using the satellites, we can also predict their upcoming of the cyclone by 2 days earlier. So we can well prepare ourselves and we can leave that places near the sea where the cyclone is coming, right? So this is how we can prevent ourselves. We can also prevent ourselves from the cyclone. Clear it is? Next comes safety measures. What should be taken during the cyclone versus before the cyclone? What should we do? We should take the warnings जो हमें दी जाती हैं by the government. They should be taken seriously, and also we should arrange ourselves for हमारा जो सामान है खाने पीने का, that should be at least for the further few days का होना चाहिए, so that we can survive for those days in which we are being affected by the floods, right? We should have enough food and drinking water, as well as emergency medicines should be there with you, and keep a record of contact numbers like ambulance or a kind of hospital, police station, right? Fire brigade, that should be along with you, so that in case of any emergency you can call them. Next is, as the sea becomes violent, fishermen should not वेंचर इनटू इट, बिकॉज साइक्लोन आने से पहले जो ओशियन होते हैं उनमें वेव्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिशरमैन शुड नॉट गो टू कैच फिशेस इन द ओशियंस. नेक्स्ट कम्स ड्यूरिंग अ साइक्लोन क्या करना चाहिए? वी शुड स्टे इनडोर, वी शुड नॉट गो आउटसाइड, प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द फ्लाइंग डेब्रिस. ऑल्सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द विंडो पेन्स, बिकॉज कांच वगैरह टूट के हमारे लग सकता है. Do not drive as you can not overtake cyclone. हम cyclone से आगे भाग नहीं सकते because cyclone की speed बहुत ज़्यादा होती है, so we should not drive at that cases. Unplug all the electrical appliances because there could be short circuiting due to the higher wind speed. Poles can be uprooted, so that should be done. Next comes, after a cyclone, what should be done? We should not immediately come out from the buildings as soon as it stops. We should
Also do not drink the water from outside because it is not purified water.